Now children, we will learn about absolute value. What is absolute value? Absolute value of an integer is always positive whether the integer is positive or negative. किसी भी इंटीज़र का पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव ही होती है. इसके लिए हम एक साइन यूज़ करते हैं, जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3. तो फर्स्ट वी कवर अप बाय द साइन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू. इसको इस तरह से साइन लगाते हैं. देन वी राइट पॉजिटिव. इट मीन्स आपको ये साइन लगाने के बाद ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3. इट्स ऑल्सो मीनिंग द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3 इज इक्वल टू 3. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 245 is equal to 245. एंड सपोज आपको यहाँ पर दिया है -36, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -36. तो आपकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है केवल इसकी मानी जाएगी. पहले तो आप इसको पॉजिटिव करेंगे तो इज इक्वल टू -36. ये तो प्लस हो गया, लेकिन इसके बाहर वाला साइन माइनस ही लगेगा. ठीक है. Since the integer 0 is neither positive nor negative, we say that absolute value of 0 is 0. Always absolute value of 0 is 0, not neither negative nor positive. Now start question number 11. Write the absolute value of each of the following. Exercise 4A. Write the absolute value of each of the following. Question number 11 of exercise 4A. So first find the absolute value of 5. We write 5 this type and we write 5. Absolute value of 5 is equal to 5. Now -7. Absolute value of -7 is equal to 7. Absolute value of -64 is equal to 64. Absolute value of 0 is equal to 0. Absolute value of 7100 is equal to 7100. Clear? Now 6 part -6. तो अब आपको ये बताना है कि absolute value of -6. नाउ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6. तो आप ये देखिए, ये तो आप पहले -6 का निकालें. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 इज इक्वल टू 6, बट बिफोर द एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस इज गिवन, सो -6 इज इक्वल टू -6. ओके. Now remaining part of these questions are in your homework. Remaining part 11 क्वेश्चन में मैंने सभी करा दिए, इसका नहीं है रिमेनिंग पार्ट कोई भी. Now name 2 integers that have the given number as their absolute value. 19. इसका मतलब ये है कि name 2 integers that have the given number as their absolute value, कि ये 19 जो है किस नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू हो सकता है. तो 19 एंड -19, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 19 इज़ 19 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 19 इज़ 19. सिमिलरली 245. तो 245 इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 245 एंड 245 इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -245. क्लियर? Now part 2, 3, 5 in your homework. Question number 3. Compare using less than, greater than or is equal 3 and absolute value of -3. Find the value first. It is positive, it is also positive, they are equal, so we write equal sign between them. Minus absolute value of -8 is 8.
and absolute value of 8 is 8, but minus sign is outside of the absolute value, so it is minus 8. Which is greater? 8 is greater than minus 8. Now first solve this. Absolute value of minus 9 is 9, but minus sign before the absolute value, but in this side not absolute value, it is bracket. So minus minus plus, to plus 9 its answer. So which is greater? This part is greater than this part. Now plus, sorry, it is minus 2. Absolute value of minus 2 is equal to 2. Absolute value of minus 2, 2, but minus sign before the absolute value, so it is minus 2. Which is greater? This part is greater. Okay. Question number 14. Write the following in descending order. देखिए सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे. -32 इज़ -32. इट इज़ ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस 68 प्लस absolute value of minus 75 75, absolute value of 80 80, then absolute value of 52 is 52, but minus sign before the absolute value, so it is minus 52. Write in descending order now. Descending order, greater to smaller. First we write 80, then 75, then 68, then minus 32, and in last smallest number minus 52. So we write here greater to smaller because it is descending order. Okay. अब हम इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है. 80, राइट हियर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 80 ग्रेटर देन 75, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 75. देन 68 कहाँ दिया? माइनस इन ब्रैकेट माइनस 68, देन माइनस 32, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 52 माइनस. ओके, it is descending order. Similarly 148, absolute value of 48 is 48. First we write, say simplify this, minus 47, absolute value of minus 52 52, but minus sign here, minus 52, minus minus plus because it is in bracket 28, absolute value of minus 50 is 50. Now write in descending order. Descending order. First we write greater number 50, then 48, 28, minus 47, minus 52. Put the sign between them and write in question form. First 50, 50 किस में दिया है? Absolute value of 50. After this 48, absolute value of 48, फिर 28 minus 28, after this minus 47, after this minus absolute value of minus 52. It is in descending order. Clear? Now next question, question number 15. Write the following in ascending order. First solve them. Minus absolute value of minus 18, 18. It is minus 64. It is minus 13. It is minus minus plus 46. It is minus 58. So ascending order, smaller to greater. Ascending order, smaller number is minus, smallest number is minus 64, then minus 58, then minus 13, then 18. ग्रेटर चल रहे हैं, स्मॉलर टू ग्रेटर, देन इन लास्ट 46. अब आप इसको साइन पुट करेंगे.
अब इसको इसी फॉर्म में लिखेंगे. फर्स्ट वी राइट -64, देन -58, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -58, -13, minus absolute value of 13, then absolute value of -18, after this -46. Clear? First find the value. Absolute value of 48 -47 -54, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा बाहर आकर के माइनस, ये ब्रैकेट में है तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 30. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -72. राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलर टू ग्रेटर. स्मॉलर कौन सा नंबर है इसमें सबसे छोटा? -54. -54, देन -47, आफ्टर दिस 30, 48, 72. अब इसको इसी फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में लिखेंगे. -54 यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -54, देन -47, -30, आफ्टर दिस 48, absolute value of 48, in last absolute value of -72. It is in ascending order. Now last question 16, evaluate. First find the values, then evaluate. -5, absolute value of -5, 5, absolute value of 3, 3, 5 plus 3 is equal to 8. Absolute value of -7, 7, absolute value of -2, 2, 7 2s are 14. Now absolute value of 17, 17, and absolute value of, देखिए ये साइन है माइनस का, ये हमारे आगे नहीं लगा हुआ है माइनस. एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15, 15 is equal to 2. Now first solve this. 6 5s are 30, divided by absolute value of -5, absolute value of 30, 30, divided by absolute value of -5, 5. 30 divided by 5 we get 6. It is answer. Now 7 minus 3, 4, into 5 minus 5, 0. Absolute value of 4, 4. Absolute value of 0, 0. 4 into 0 is equal to 0. Its answer. Now exercise 4A is completed, and everyone do its multiple choice question. If you have any query, you can take on my personal number. Okay.